Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. So we were doing double integration, applications of double integration we were doing. So we did an example on volume, right? The second example, calculate the volume of the solid bounded by the surface x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0, and x plus y plus z is equal to 1. Means all the three planes, coordinate planes, and this plane. So first of all, to calculate the limits of x and y, what we put, we take the projection of this plane on z is equal to 0 axis. So put z is equal to 0 to get the projection of x plus y plus z is equal to 1 on xy plane. So what we get, x plus y is equal to 1. Now what will be the volume? Volume will be z dx dy. Now put the limits of, now what is x plus y is equal to 1 on xy plane. xy plane mein y is equal to 0 and x is equal to 0, and this is x plus y is equal to 1. So we are taking x dx first, so we take a strip parallel to x-axis. Sorry. Take a strip parallel to x-axis. So the value of x is varying from 0 to 1 minus y. And the value of y varies from 0 to 1. Now put the value of z. Z is 1 minus x minus y dx dy. Now you calculate the volume. क्या आया? One by six. Yes, just 1 by 6. Now coming to another example. Evaluate double integral y square dx dy over the area outside x square plus y square minus ax is equal to 0 and inside x square plus y square minus 2ax is equal to 0. So there are two circles and you have to calculate the area outside this and inside this. Now first circle is this. Suppose this is C1
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0। इस सर्किल का सेंटर क्या होगा एंड रेडियस क्या होगा, जल्दी से बताओ। माइनस ए बाई 2 कॉमा 0, ए बाई 2 कॉमा 0 यस, a by 2 0 एंड रेडियस एंड ए बाई 2 ही होगी शायद। सिमिलरली सेकंड का एक्स A स्क्वायर comma प्लस 0 वाई। So here center is a0 and radius is a। तो ड्रॉ कर लो इस सर्किल को। This is a by 2 and this is also a by 2। ठीक, this radius is a by 2 and this is a, ये a हुआ। उसको बताएं। लेजर सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है। चलो हम लोग मैम कंट्रोल वैसे ही लिख Z रहे कर हैं, दिस लीजिए, इज a। कंट्रोल Z कर लीजिए। अभी भी नहीं हो रहा। this point is, this is radius is a। और हमारा रीजन क्या हो गया, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये अंदर वाला, इनसाइड दिस सर्किल एंड आउटसाइड दिस सर्किल। ठीक है, ये बाउंड्री रीजन। Okay, so now we have to calculate this y square dx dy। So let us change it into polar coordinates। So polar coordinates में put x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। So C1 सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x is equal to r theta और y is equal to r sin theta रखोगे तो r is equal to a cos theta and similarly C2 की इक्वेशन हो जाएगी r is equal to 2a cos theta। रख के देख लो। yes यस मैम। इसने हमारा बिगाड़ दिया सब। कहाँ पहुंच गया। ठीक है, चलो
ठीक है, ये हमारा A था. Now we have to calculate the area. Area will be put नहीं area sorry नहीं, ये इंटीग्रल निकालना है. So ये इंटीग्रल y square. So y square means r square sin square theta and dx dy. Now dx dy will be r d theta dr. ठीक, r dr d theta. मैम वाई स्क्वायर बोल वैल्यू दो. इंटीग्रल में था ना y square dx dy. क्वेश्चन पढ़ो. और dx dy की वैल्यू r dr d theta. Now put the value of r. r कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? तो take a strip parallel to r axis. So r is varying from equation of this circle to equation of this circle. So r is equal to a cos theta से r is equal to 2a cos theta तक वेरी कर रहा है. Minus pi by 2 to pi by 2. So minus pi by 2 to pi by 2. Now you calculate the integral. Integral निकालना था, not the area. जो भी इंटीग्रल है. मैम So you can find out this integral. मैम मैम जब मैम जो वो dx by बोलो. dx dy था उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मैम r sin थीटा d थीटा और r cos थीटा d थीटा आना चाहिए ना मैम. dx dy की वैल्यू r dr d थीटा आती है. अभी हम लोग इसको आगे डिराइव करेंगे. ठीक, तो अभी जो लिख रहे हैं उसे मान लो. अभी आगे आने वाले सेक्शंस में ये कैसे आता है ये भी बता देंगे. ठीक है. यस मैम. तो इसकी वैल्यू निकाल लेना. हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. 15/64 पाई a की पावर 4. Now coming to the third application, which is total mass of region R. How you calculate the total mass of the region R? Let fxy is equal to rho xy be a density function. Density means mass per unit area. Of a distribution of mass m of mass in xy plane. Then the total mass of R is capital M is equal to double integration over the region R fxy dx dy. Okay, so this is the mass. Fourth is center of gravity. So let fxy is equal to rho xy be a density function. Then the coordinates of the center of gravity x bar y bar of the mass m in R are given by
x bar is equal to 1 upon m, double integration over the region R, x fxy dx dy, and y bar is equal to 1 upon m, double integration over the region R, y fxy dx dy, where the value of m you will calculate from the above formula. Now fifth are moment of inertia. So again, let fxy is equal to rho xy be a density function. Then Ix is equal to double integration over the region R, y square fxy dx dy, and I is equal to double integration over the region R, x square fxy dx dy, of inertia of the mass in R about the x-axis and y-axis respectively. Now I0 is equal to Ix plus Iy is the moment of inertia of the mass in R about the origin. Okay. Now similarly, if you shift the axis to some other place, then so similarly, Iy is equal to double integration over the region R, x minus a whole square fxy dx dy, and Iy is equal to double integration over the region R, y minus b whole square fxy dx dy Ix. give the moment of inertia. मैं भी Ix होगा. नहीं Iy होगा. दोनों ही Iy Iy हैं. की मैम आपने दोनों ऊपर में वाला आई दोनों Iy लिखे. अच्छा ऊपर वाला Ix होगा. This is Ix. मैम प्रीवियस पेज पे मैम Inertia. आपने Ix वाले में y स्क्वायर fxy dx dy लिखवाया है मैम. हाँ वही है. मैम इसमें मैम Ix के साथ x वाला फंक्शन है x स्क्वायर में, और मैम इसमें y और पिछले वाले में अलग है. अच्छा गलत हो गया है. हाँ देख लीजिए मैंने. हाँ सही सही. This will be Iy. Y के साथ x होगा और वही मैम. x के साथ y होगा. ठीक. हाँ इनर्शिया. हाँ चलो ठीक है. थैंक यू. और x is equal to a and y is equal to b respectively. Similarly, like 1 upon a double integration over the region R fxy dx dy gives, where capital A is the area, gives the average value of fxy over R, where
A is the area of the region R. ठीक, तो अब इन सब के लिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं using all these formula. Right, find the center of gravity of a plate whose density rho xy is constant and is bounded by the curves y is equal to x square and y is equal to x plus 2. Also find the moments of inertia about the axis. ठीक, तो अब ये करोगे अपने आप से? मैम आप करा दीजिए। मास ऑफ द प्लेट पहले निकाल ले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। 1/m करना है ना फॉर्मूला में। यस मैम। मास ऑफ द प्लेट इज इक्वल टू rho xy dx dy ओवर द रीजन R। सो रखो जल्दी से। नाउ यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि rho xy is constant। ठीक, सो लेट rho xy is equal to constant k। सो k into dx dy या dy dx दोनों सेम होगा, हम लोग dy dx कर लेते हैं। ठीक, so curves are y is equal to x square and y is equal to x plus 2. So curves are y is equal to x square, limits of the y are and y is x plus 2 and limit of x कैसे मिलेंगी? Point of intersection of these two curve. तो point of intersection of these two curve निकालो, ड्रॉ कर ले हम लोग कर्व को। चलो, तो पहला क्या दिया हुआ है? y is equal to x -1 2 y is equal -1 2 आ रहा है। x square। -1 2। ठीक है, चलो -1 2 और कर्व ड्रॉ भी करके देख लो। और दूसरा लाइन क्या है? y is equal to x plus 2। so this will be y is equal to x plus 2। ये आएगी। तो दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, अंदर वाला। ये बना रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। और ये वाला पॉइंट क्या निकलेगा? -1 1 एंड दिस पॉइंट विल बी 2,4। ठीक, so this is x axis and this is y axis, so you have to take a strip parallel to y axis. So x varies from this curve to this line, so this curve to this line and -1 to 2. so निकाल लो कितना आया? 9k/2। 9k/2। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालो। फॉर्मूला लगाओ सिंपल। center of gravity x bar y bar is x bar is 1/m double integration over the region R x rho xy dx dy। अब सारी वैल्यूज उठा के रख दो बस खाली। तो दिस इज 1/m हो जाएगा 2/9 के और अगेन रो xy अगेन के, तो ये के बाहर ले आए हम लोग, बाहर आ गया के, अंदर क्या बचा? x into dx dy।
तो dx dy को अगेन dy dx लिख दे, dx dy भी कर सकते हो, take a strip parallel to x axis, then you can calculate, otherwise I am writing because I have drawn the curve like this, so I am writing here. So again this is from x square to 2 plus x and minus 1 to 2. बताओ क्या आएगा? बताओ क्या आया जल्दी से, दोनों वैल्यूज। 9/4. नहीं, this is half and this is 8/5. Yes, ma'am. Half. कैलकुलेशन करना सही से, और मैम के आंसर लिखते ही तो तुरंत आ जाता है। Yes, ma'am. सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा? Therefore half 8/5 this point. Now moment of inertia निकाल लो। About the axes निकालना है, means about both the axes, about x axis, y axis, double integration over the region R, y square rho xy dx dy. So this is equal to y square और rho xy की वैल्यू के बाहर आ गई, dx dy। dx dy को अगेन dy dx लिख देते हैं। dy dx, and this is from x square to x plus 2 minus 1 to 2. जल्दी से कैलकुलेशन करो। About moment of inertia about y axis. So Iy is equal to double integration over the region R, x square rho xy dx dy. So this is equal to rho xy बाहर चला गया, के अंदर बचा x square dy dx. Again limits are same. This is 63/20K and this is 423/28K. So these are the moment of inertia. Now coming to triple integrals. Now more questions you will solve from the book. More questions
on change of order of integration, how you calculate the region of integration, and how, if the limits are given, then how you calculate the region. If the region is given, then how you calculate the limits. I have illustrated all the examples. For more questions, you will consult the book, and I'll share the assignment also. This is suppose the question is given, evaluate the triple integral over the region R, y dx dy dz, where R is the region bounded by the surfaces. अभी वॉल्यूम कैसे निकाला था, सेम वैसे ही निकालेंगे इसे भी, ठीक. Now the surfaces are x is equal to y square, x is equal to plus 2, 4, z is equal to x square plus y square, and z is equal to y plus 3. So what we do, we take the projection of the, now these are in the xy, this is equal to 0 plane, this is in the z is equal to 0 plane, this is in the in all the axes x, y, z sab mein hai, and this is also there. So what we do, we take the projection of all these in z is equal to 0 plane, ठीक. First, so z varies from where, x square plus y square by 4 to y plus 3. Z is varying from this, ठीक. यहाँ से तो हमें z की वैल्यू मिल नहीं रही है, and projection of R on z is equal to 0 plane is the region bounded by x is equal to y square and x is equal to y plus 2, ठीक. ये है, अगर हम इस जो भी रीजन है हमारा R रीजन, उसका प्रोजेक्शन x is equal to xy प्लेन पे लें, तो कितना पोर्शन, हाउ मच पोर्शन ऑफ द रीजन इज कमिंग इन xy प्लेन, this curve is coming and this curve is coming in xy plane, ठीक. So these two will give the values in xy plane. Ma'am, y plus 3 equals to 0 is not included in that curve. अगर मैम हमें प्रोजेक्शन लेना है z इक्वल्स टू 0 डालेंगे तो y plus 3 मैम 0 होगा ना मैम. Projection y is equal to 0. No, these tools are used to calculate the limits of value of z, how z is varying depending upon z x, because at last we have to calculate the value of z in terms of x and y, ठीक. क्यों अभी बता करते हैं तब समझ में आएगा. इंटीग्रल है हमारा क्या, इंटीग्रल है हमारा y dx dy dz, ठीक. So if you are writing dx dy dz, means first you will calculate x. So x should be written in terms of y and z, ठीक. Then when this is dissolved, then y should be written in terms of z, and when this z should have constant limits, so that you get the answer, like you have been doing in the previous double integration also. You, if it is dx dy, then you write x in terms of y, and then y has constant limit. So here also we'll follow the same rule. Now here first we write one variable in terms of two variables, okay? So we are writing z in terms of x and y. You can choose any variable, you can write x in terms of y and z also, okay, if you are writing like this. So we'll change the order of integration. First we'll calculate dz, because this is a bounded curve, so it doesn't produce any change in the value of the integral. So we'll first write dz
and z in terms of x and y, and then comes dx and dy. Okay, so z in terms of x and y are from, we have written this curve to this curve. So this is the value of z is dependent upon x square plus y square by 4 to y plus 3. ठीक? Then the value of x, how x is varying, the two curves when x is equal to y square and x is equal to y plus 2. So x in terms of y, so x in terms of y is y square to y plus 2. And then again the value of x कहाँ से कहाँ vary कर रही है, तो value of x कहाँ से कहाँ vary कर रही है ये निकाल लो, इन दोनों का point of intersection. ठीक, वैल्यू ऑफ y होगी ना मैम? हाँ वैल्यू ऑफ y होगी, dy है. सो वैल्यू ऑफ y इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, निकाल लो. -1 से 2. ठीक, अब सिंपली इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है, वो आप कैलकुलेट कर लो. करा दीजिए मैम. इंटीग्रल नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, करो तो पहले. नाउ इससे जब इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू z तो क्या आएगा, पहले आपको ये वाला इंटीग्रल कैलकुलेट करना है ना, ये. सो y विद रिस्पेक्ट टू z, तो z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y विल बी कांस्टेंट, सो यू गेट yz. y यहाँ रखा गया, अब z की लिमिट्स रखो, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली. ये तो आपको करना चाहिए ना खुद से. नाउ दिस इज dx dy. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये वाला इंटीग्रल कैलकुलेट करना है. ठीक, तो विद रिस्पेक्ट टू x अगेन y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट एंड ऑफ x, तो क्या आया, -1 से 2, और अंदर क्या बचा, 3x माइनस y की पावर 4 by 4x minus x cube by 12, and put the limits from y square से y plus 3. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो x की वैल्यूज, और अब विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करो. मैम काफी कॉम्प्लेक्स हो रहा है मैम ये. हम लिख तो रहे हैं, कहाँ कॉम्प्लेक्स हो रहा है. अब x की जगह पहले अपर लिमिट रखो y plus 3, सारे में x की जगह रखना है बिकॉज ये y plus 2 होगा. एंड देन y की जगह रखो y plus 2 है तो y plus 2 कर दो. क्या बचा, y स्क्वायर माइनस y की पावर 4 प्लस y plus 2 माइनस y स्क्वायर माइनस 1/12 y plus 2 होल क्यूब माइनस y की पावर 6. अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y करो. ठीक, पहले x की लिमिट रखोगे y plus 2 एंड देन माइनस x की लिमिट रखोगे y स्क्वायर. अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा तो ये मैम. विद रिस्पेक्ट टू, मैम इक्वेशन बहुत लंबी हो गई मैम. अभी तो मैम y की लिमिट भी रखेंगे उसके बाद. हाँ तो रखो ना, इक्वेशन लंबी हो गई तो क्या क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे. अब ये विद रिस्पेक्ट टू y आ गया, अब सिंपल हो जाएगा. y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3, y की पावर 4 का y की पावर 5/5, नीचे 4 रहेगा, कुछ गलत सा लग रहा है इसका मैम. 3y स्क्वायर बाई 2. अगर जो गलत आ रहा है तो इससे चेक कर लो, यही आना चाहिए. और फिर जब सारी लिमिट्स
जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके एंड देन यू पुट द अपर लिमिट 2 एंड माइनस लिमिट -1, देन द आंसर विल कम टू बी 837/160। इंटीग्रेशन बड़ा है तो क्या करोगे? नहीं करेंगे मैम। करो। Ma'am, हम्म in written exam, can the students usually complete the question paper? Or is it हाँ, very बिल्कुल long? कर लेते हैं। नो, दिया ही ऐसा जाएगा कि फाइनल एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में यू आर गिवन 15 minutes text. Now if it is a 2-hour question paper, if it is online, then it is a 2-hour question paper. Otherwise, if it is offline, then you are given 3 hours to complete the question paper. मैम आप बता दो मैम कि इमसेम ऑफलाइन होंगे। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, वो डिपेंड अपॉन द कंडीशन। कंडीशन इम्प्रूव कर रही है, अच्छी बात है, तो खुल गया तो ऑफलाइन एग्जाम होंगे। ये हम अभी से कैसे बता दें? कोरोना है ना मैम, कंडीशंस तो कोरोना अभी- इम्प्रूव कर रहा है। हाँ, तो इम्प्रूव कर रहा है तो ऑफलाइन हो सकता है एग्जामिनेशन। बिल्कुल खुल गया तो ऑफलाइन होगा। पढ़ाई उसी हिसाब से करो। यस मैम। मैम कल क्लास होगी मैम? कल तो छुट्टी रहेगी ना, 26 जनवरी है, कल छुट्टी रहेगी, कल क्लास नहीं होगी। यस कल की मैम क्लास आप चाहो तो मैम हाँ, परसों क्लास ले में कितनी सकते हैं, परसों सुबह 8 बजे। नो मैम, नो मैम मैम परसों बहुत परसों क्लासेस क्लास रहती हैं मैम। बहुत परसों 10 क्लास बजे। चलो फिर नेक्स्ट वीक लेंगे, कल की Yes, क्लास यस ऑफ है। मैम। यस मैम, नेक्स्ट वीक Yes. मंडे को। मैम हम्म मैम एक दो बच्चे मैम मीट में मैम शो नहीं कर रहे मैम। एक अवधेश राज है मैम, वो भी नहीं शो कर रहा था। हाँ मैम। अब ये हम कैसे बताएं? उसका नेटवर्क कुछ इशू होगा। नहीं नो मैम, मैम, सिर्फ इसी क्लास में उसकी होता है। तरफ से मैम नहीं कर रहा है मैम, पूरा इसी क्लास में। क्लास में होता है मैम। वो क्लास ज्वाइन कर लेता है ना,